remains at the forefront of the community with a shared future with all neighboring countries. In this connection, China and Pakistan will commit to the four always. First, always maintain a high degree of mutual trust and mutual support. The two sides agree to follow the important consensus of our top leadership as the strategic guidance to continue to consolidate and deepen strategic mutual trust and firmly support each other in safeguarding our respective core interests. China warmly welcomes Prime Minister Shabazz to China for the SCO Tianjin Summit and the commemoration marking the 80th anniversary of the victory of the war of the Chinese people against Japanese aggression and the World Anti-Fascist War. Second, always focus on development and pursue mutual benefit and win cooperation. The two sides agree that the current priority for China-Pakistan cooperation is high-quality CPEC cooperation and build an upgraded version of CPEC. We will build on our past achievements to build a growth corridor, a livelihood-enhancing corridor, an innovation corridor, a green corridor, and an open corridor to promote greater synergy in the 5 corridors with Pakistan's development plannings. We will work hard to deepen our industrial, agricultural, and mining cooperation to improve the Pakistani people's welfare and accelerate the fostering Pakistan's capability for self-sustained development and increase Pakistan's economic resilience. We will also jointly support the development and operation of the Gwadar port and promote the KKH realignment project in an orderly manner, and we welcome third-party participation in ML1 project. The two sides will jointly prepare and ensure the success of the series of commemorative activities for the 75th anniversary of the China-Pakistan diplomatic relations next year. China deeply sympathizes with Pakistan in the wake of the heavy rainfall and will immediately provide emergency humanitarian assistance. Third, always safeguard security and delivering a better life for our people. China highly commends Pakistan's tireless efforts and immense sacrifice in combating terrorism. China firmly believes that Pakistan's counterterrorism operation will secure the ultimate victory, and Pakistan will effectively protect the safety and security of Chinese personnel, projects, and institutions in Pakistan, and will work with China to deepen counterterrorism security cooperation and to increase our regional counterterrorism coordination. The two sides will jointly carry out more small and beautiful livelihood programs in Pakistan to have a greater sense of gain to the Pakistani people. We will vigorously promote exchanges and cooperation on education, youth, and agriculture to further consolidate the public support for China-Pakistan friendship. Fourth, always coordinate closely together and meet challenges together. Given the interconnection between the situation in South Asia and the broader transformation in the world, the two sides agreed to strengthen coordination and cooperation on regional affairs, and we seek resolution to differences and disputes through dialogue and consultation. We will follow the Asian values of peace, cooperation, openness, and inclusiveness in conducting cooperation and work together to build our region into a peaceful, safe and secure, prosperous, beautiful, and amicable home in Asia. This year marks the 80th anniversary of the founding of the United Nations. The two countries will firmly support the victorious outcome of World War II, practice true multilateralism, oppose all unilateral bullying practices. The two sides will take the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative as important platforms and avenues to enhance solidarity and cooperation among the Global South, to promote an equal and orderly multipolar world and a universal, beneficial, and inclusive economic globalization, and to build a community with a shared future
for humanity. Long live China-Pakistan friendship. Thank you. Now the floor question. The first question will be addressed to His Excellency Mr. Ishaq Dar. Yes, Ms. Nimra Suhail. Thank you, spokesperson. I'm Namra Suhail from Pakistan Television. To our Deputy Prime Minister, Mr. Ishaq Dar, sir, how do you see Pakistan-China relations in the context of prevailing geopolitical tensions, especially the realignments that are taking place globally? Thank you. Thank you. Very, I would say, interesting question. Indeed, the current international situation is undergoing unprecedented transformation. On economic front, we are grappling with the issues like volatility in energy and commodity markets, supply chain disruptions, rise of trade and tech barriers, and impacts of climate change. The present challenges have been exacerbated by geopolitical upheavals, terrorism, and exclusionary approach by some countries, thereby causing harm to the regional peace and stability. Notwithstanding, the cardinal pillar of Pakistan's foreign policy would not change, which is to establish friendly ties with all countries of the world based on convergence of interest, shared values, mutual respect and equality, excuse me, and for global peace and stability. The prevailing geopolitical milieu therefore necessitates Pakistan's closer alignment with China, which is our all-weather strategic cooperative partner and brother, trusted friend, and a great neighbor. Our two countries enjoy commonality of views on regional and global issues. We share China's vision for the negotiated settlements of all outstanding disputes, upholding of the international law, and centrality of the UN system, and inclusive economic globalization for all nations of the world. As a trusted friend and strategic partner, China is mainstay and cornerstone of Pakistan's foreign policy. Our bilateral friendship occupies paramount importance. We would continue to maintain our strategic communication and coordination and further deepen and expand our ironclad friendship and brotherhood as envisioned by our leadership and peoples of Pakistan. I hope I answered your question. Thank you, sir. Next question is addressed to His Excellency Mr. Wang Yi and Mr. Yang Xiao from Xinhua. Sir. Thank you. 王毅外长您好，我是新华社记者蒋超。巴基斯坦是您此次访问南亚三国的最后一站，您同印度、阿富汗、巴基斯坦政要进行了密集交流。You've engaged in intensive communication with political leaders of India, Afghanistan, and Pakistan. So how do you assess the situation in South Asia and the role of China-Pakistan cooperation? 我首先补充一句，刚才巴基斯坦电视台提了一个非常 First, I'd like to say that the Pakistan journalist just raised a very interesting and meaningful question, and I totally agree to the answer of Mr. Dar. What I want to say is that it is because of the tense geopolitical situation that we now see more clearly the significance of China-Pakistan cooperation and the value of China-Pakistan as ironclad friends. Now, I'd like to take your question. Indeed, I visited 3 countries, and Pakistan is the final stop, and the most important stop. The current trip made me feel that all countries in South Asia enjoys a long history, splendid culture, and a large population. China and South Asian countries are close neighbors connected by mountains and rivers, and South Asian countries are an important part of China's efforts to build a regional community with a shared future. This time I visited India, Afghanistan, and Pakistan, and I keenly felt
South Asia's development enjoys strong potential and momentum. The 21st century should be an era for Asia and especially South Asia to accelerate their development and revitalization. Despite different national conditions, all three countries have realized that accelerated development is the priority of all of them, and it is the biggest common denominator of the three countries and all countries in the region. A peaceful, stable, growing, and prosperous South Asia serves the common interests of all sides and meets the expectation of all peoples. All three countries will enhance good neighborliness and friendship with China, their largest neighboring country, and deepen exchanges and cooperation and pursue mutual benefit and win-win. Especially under unilateral bullying practices, all three countries believe that it is important to uphold multilateralism, safeguard their legitimate rights and interests, to build an equal and orderly multipolar world, and promote a universally beneficial and inclusive economic globalization. And China will become South Asian countries' trustworthy partner and a strong anchor for them. China follows a pursuit to foster an amicable, secure, and prosperous neighborhood, and China advocates the philosophy of amity, sincerity, mutual benefit, inclusiveness, and a shared future for humanity. China is always committed to engage in mutual respect, mutual accommodation, mutual trust, and mutual support with South Asian countries. China and South Asian countries are natural partners, and we enjoy ample space for cooperation. The China-India relationship is a long-standing one, and despite all these setbacks, it is showing a clear historical logic. China-Pakistan friendship has withstood the test of time and has been tempered. It is showing stronger internal drive. China's partnership with India, Pakistan, and all other neighboring countries is not targeted at any third party, and it is not affected by any third party. Before I conclude, I wish to stress that China and Pakistan are ironclad friends and all-weather strategic cooperative partners. And China-Pakistan community with a shared future is at the forefront of building a regional community with a shared future, and it is playing an important exemplary role. China and Pakistan are taking the lead in implementing the Global Development Initiative, and the development of CPEC has not only benefited our two peoples, it is also extending to other countries, including Afghanistan. China and Pakistan are practicing the Global Security Initiative. We are following the vision of common, comprehensive, cooperative, and sustainable security, and we are committed to engage in high-standard security cooperation. China and Pakistan attach great importance to the Global Civilization Initiative. We transcend the differences in culture and social systems, and we are promoting greater mutual understanding and mutual amity between our two peoples. China and Pakistan are both important members of the Global South. From this year, Pakistan will serve a non-permanent member in the UN Security Council. So in June, Pakistan did a wonderful job as the rotating presidency. I congratulate Foreign Minister Dar's hard work. And in the next 2 years, China has another important partner that will uphold fairness and justice in the Security Council. We will engage in close coordination and cooperation and safeguard the legitimate interests of the developing countries and the Global South. Thank you. Thank you very much, sir. Second part of the ceremony. In July 2022, the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China presented a gift of 2 million RMB to the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan following the visit of China's State Council and Foreign Minister.
This gift was utilized in the solarization of 2 accommodation facilities under the Ministry of Foreign Affairs administrative control. The solarization process has been successfully completed. I would now like to request His Excellency Mr. Wang Yi to present a framed picture to the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, marking the completion of the solarization project. चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसहाक डार ने कहा कि चीन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। चीन को पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत हासिल है। चीन और पाकिस्तान आहनी बरादर मुल्क है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि चीन के साथ सन्नत, तिजारत, ज़राअत और मायनिंग के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक हुआ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तमाम पहलुओं पर हमारा मौक़िफ़ यकसां था। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। This headline news is brought to you by दाग लेफ्ट पे था ना, राइट से राइट कर दिया, राइट सब राइट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया, आपसे अदालत के 2 सवालात हैं। आपने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा, क्या जमानत से मुतालिक केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? क्या साजिश के इल्जाम पर इसी अदालत ने मुल्जिमान को जमानत दी? क्या तसलसल का उसूल केस पर अप्लाई नहीं होगा? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती है। आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का इवेंट था। इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ न मुआफ़ी का। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा सुहेल वड़ाइच की एक नामुनासिब हरकत थी। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मुफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते की तकदीरें तब्दील करने वाला मुल्क है। यही वजह है कि इस पर तवातुर से हमले होते हैं। नौजवानों को अपनी नजरियाती रियासत की मिरास और तारीख समझनी चाहिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मजबूत आसाब के मालिक हैं। वो सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। उनकी खूबियाँ उन्हें सदर ट्रंप के लिए फितरी शराकत दार बनाती हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। बिजनेस सहूलत मरकज़ में फराहम करदा सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है नौजवान इस मरकज़ को कामयाब बनाएंगे। हम कारोबारी मराकज़ को रोल मॉडल बना सकते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ।
वज़ीर ख़ारजा इशक़ डार की चीनी हममंसब से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया। बैठक में सीपैक समेत पाक चीन ताल्लुकात के हर पहलू का जायजा लिया गया। इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए चीन के अज़म को सराहते हैं। तमाम अहम मामलात पर इत्तेफाक राय मौजूद है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, शानदार मेज़बानी पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हो रहा है। मुल्क भर में मानसून की शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़ायदीन से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से सिंध बिलखुसूस कराची में बारिश से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर आज़म की हाफिज़ नईम रहमान और खालिद मकबूल से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। हाफिज़ नईम ने अल खिदमत फाउंडेशन की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों की तारीफ की। केपी में नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों में पर तबादला ख्याल किया गया। NDMA और दीगर वफाकी इदारों के भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कराची में 240 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को तकलीफ का एहसास हम सबको है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बारिश के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई। नालों की सफाई ना होती तो बारिशों का पानी ताहाल सड़कों पर होता। बारिश वक्फे वक्फे से होती तो इतनी मुश्किलात का सामना ना होता। पूरा पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर है। और शहर कायद में आज भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची में तेज़ और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया। कई सड़कों पर ताहाल पानी जमा। बारिश के बायस कटी पहाड़ी के तोदे गेड़े से सड़क ब्लॉक हो गई। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जान से गए। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक। बारिश से शहर में बिजली का तवील ब्रेक डाउन। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक रहने का इम्कान। यार, ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। एक नए अज़्म के बोल, इत्तेहादो यगानगत के बोल, अवाम के ख्वाबों के बोल, पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और इस्तेहकाम के बोल। बोल पाकिस्तान के साथ। यार, ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। राइट, सब राइट कर देगा। दाग लेफ्ट पे था ना? राइट से राइट कर दिया। राइट सब राइट कर देगा। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेषा सलीम। यहां पर आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में